So our next topic is response of an LTI system. और रिस्पॉन्स ऑफ एन एलटीआई सिस्टम की हमने जब बात की थी तो हमने देखा था कि वी कैन एनालाइज द रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम बाय डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन विल बिकम डिफरेंस इक्वेशन. अगर हम डिस्क्रीट डोमेन की बात करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो कितना हो जाएगा, that will become difference equation. So let's see how to solve that equation. The idea is response of an LTI system. So how to have the response of an LTI system? This is the total idea. So I can say in continuous time domain, in continuous time domain, we can represent the equation by a differential equation. Or we can say this is where yt is output of the system and xt is input of the system. So in continuous time domain, you can represent response of a system by this, and the output will be, there will be two output, 0 input response and 0 state response. है ना? 0 input response when x of t is equivalent to 0, and 0 state response when all initial conditions are 0. I should say when all initial conditions जब सारी इनिशियल कंडीशन 0 हो जाएगी तो 0 स्टेट रिस्पॉन्स आएगा, और जब इनपुट 0 हो जाएगा तब 0 इनपुट रिस्पॉन्स आएगा. सो दिस आर टू कंडीशंस फॉर कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम. नाउ वी कैन मैप दिस इनटू द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम. इन डिस्क्रीट टाइम सिस्टम यू कैन से दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बिकम डिफरेंस इक्वेशन. क्या हो जाएगा? ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी in discrete time domain. In discrete time domain, this differential equation will become difference equation. This differential equation will become difference equation, and the solution will be same. I should say y of n will be 0 input response and 0 state response, or I should say this is CF and this is PI. तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तो हमने सीख लिया मैथमेटिक्स में हाउ टू, या लाप्लास का यूज करके कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है. बट हाउ टू सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन, एंड व्हाई, हाउ डिफरेंस इक्वेशन इज गिवन. इट्स y ऑफ n प्लस a1 टाइम्स ऑफ y n minus 1 प्लस a2 टाइम्स ऑफ y n minus 2 and so on equal to
b1 times of xn plus b2 times of xn minus 1 and so on. This equation is known as difference equation. इस equation का क्या नाम है? इस equation का नाम है डिफरेंस इक्वेशन। और इसमें CF और PI का कैलकुलेशन कैसे होगा जरा उसकी बात करते हैं हम। हाउ टू कैलकुलेट CF एंड PI इन डिफरेंस इक्वेशन, लेट्स सी। सो लेट्स सी द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय the difference equation is given by the solution of difference equation. So how to deal with this? How to find the solution of a difference equation? Let's see how to calculate the solution of a difference equation. So I should say the solution of difference equation, the equation is given by this: y of n plus a1 y of n minus 1 plus a2 y of n minus 2, and this is equivalent to x of n, let's say this is b naught, plus b1 x of n minus 1 plus b3 x of n minus 3 and so on. Let's say this is one difference equation which is given, है ना? How to calculate CF part, है ना? और I should say we are interested in zero input response. हम किस में इंटरेस्टेड हैं? Zero input response. So let's say input is zero. Input is zero means I can say x of n is equivalent to zero. तो x of n जीरो है तो x of n के बाद आने वाले सारे शिफ्टेड सिग्नल भी कितने हैं? जीरो। जब इनपुट ही जीरो कर दिया तो कोई अवेलेबल है नहीं। x of n, x of n minus 1, x of n minus 2, all inputs are zero. Then how will you go? You will write y of n equal to lambda to the power n. क्या करेंगे आप? पूरी इक्वेशन में y of n को lambda to the power n से रिप्लेस करेंगे और निकालेंगे यहां लेमडा का वैल्यू। सपोज रूट्स आर फर्स्ट केस, है ना, कि वाई एन इक्वल टू लेमडा टू द पावर एन से रिप्लेस किया एंड यू आर गेटिंग लेमडा 1, लेमडा 2 एंड लेमडा 3। सो रूट्स आर लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 अप टू लेमडा एन। आपको इतने रूट्स मिले और कोई भी दो रूट्स बराबर नहीं है। लेमडा 1 इज नॉट इक्वल टू लेमडा 2, is not equal to lambda 3 and this is not equal to lambda n. Then y of n, yeah, I should say yzir, y of zero input response is known as c1 into lambda to the power n plus c2 into lambda 2 to the power n, and this goes up to cn into lambda to the n to the power n. क्या समझे? सेम सॉल्यूशन जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन में CF लिखते थे और रूट d, आप d बाई dt को अगर आप d से रिप्लेस करते थे तब जो भी रूट आते थे तो कितना लिखते थे? ये इक्वेशन लिखते थे, है ना? वहां e लिखते थे, यहां क्या है? c1 into lambda to the power n. Now the second case, this is the first case when roots are different, distinct root. Let's say I am taking second case, and what second case is saying? The second case is saying that the second case, the roots of the difference equation are lambda 1, it is equivalent to lambda 2, lambda 3 and lambda 4. ये अगर चार रूट्स आए हैं तो डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? सो हाउ वी विल प्रोसीड? वी विल राइट c1 प्लस c2 इंटू n इंटू lambda 1 is equivalent to lambda 2, so this to the power n plus c3 into lambda 2 to the lambda 3 to the power n
प्लस एंड यू कैन गो, इसके बियॉन्ड आप जा सकते हैं ना, C4 इंटू lambda to the power n, and this is it. How to solve this? When you are having repeated roots, when you are having more than when you are having, let's say you are having the case lambda 1 equal to lambda 2 equal to lambda 3 and lambda 4, lambda 5s are roots of this equation, then I should write C1 plus C2 into n plus C3 into n square into lambda 1 equal to lambda 2 equal to lambda 3, तो मैं इसको lambda 1 ही लिख देता हूं, lambda 1 to the power n plus C4 into lambda 4 to the power 4 plus C5 into lambda 5 to the power 5. वही रूल्स हैं जो हम CF को निकालने के लिए रखते थे, होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालने के लिए जो रूल रखते थे वही रूल है. एंड सपोज यू आर हैविंग कॉम्प्लेक्स, तो यहां jn माइनस jn कर दे. सो आइडिया इज सेम फॉर द आइडिया इज सेम फॉर ऑल, मतलब जैसा भी हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन में वही आइडिया यहां भी एप्लीकेबल है. तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स और होमोजीनियस इक्वेशन. नाउ लेट्स हैव द सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल और जीरो स्टेट रिस्पॉन्स. So solution of differential equation is y of n is equivalent to ZIR, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया, एंड सेकेंड पार्ट इज ZSR. जो सेकेंड पार्ट है वो कौन सा है, ZSR. दोनों को कैलकुलेट करना है, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स और नोन एज पर्टिकुलर इंटीग्रल और जीरो स्टेट रिस्पॉन्स. So how to do this? Let's say we are having y of n plus a1 times of y n minus 1 plus a2 times of y n minus 2, and this goes up to b1 x of n plus b2 x of n minus 1, and this goes up to infinite. Then I should say I will replace my y of n is equivalent to some k times of x of n. कि अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो आउटपुट कितना होगा, इनपुट्स मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, बिकॉज दिस सॉल्यूशन इज ए लीनियर सॉल्यूशन, और लीनियर अगर सॉल्यूशन होगा तो yn इज इक्विवेलेंट टू k टाइम्स ऑफ xn. जैसे अगर xn का वैल्यू आपको कितना दिया है un, तो yn आउटपुट पे कितना मिलेगा कि इसमें कुछ नॉन जीरो k का मल्टीप्लाई हो जाएगा और आउटपुट को मिल जाएगा. तो इस तरीके से हम इसका कौन सा रिस्पांस निकालेंगे, जीरो स्टेट रिस्पांस निकालेंगे. एंड व्हाट इज फाइनल सॉल्यूशन, वो जितने भी कांस्टेंट कैलकुलेट करना है वो दोनों सॉल्यूशन को रख के करना है, ZIR प्लस y ऑफ ZSR, दोनों को ऐड करके फिर इन सभी के कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे. तो रूल सारे वही हैं जो आपने कंटिन्यूअस डोमेन में पढ़े थे, वही रूल मुझे कहां लगाना है, डिस्क्रीट डोमेन में लगाना है. सो टोटल सॉल्यूशन इज समेशन ऑफ CF एंड PI. सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन is CF plus PI. First point. Second point, we can calculate the constant C1, C2 up to C1 after adding CF एंड PI. तो आप क्या करेंगे, CF और PI को ऐड करके कांस्टेंट निकालेंगे. एंड दिस आर टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, एंड हाउ वी आर कैलकुलेटिंग जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, आउटपुट इज k टाइम्स ऑफ इनपुट. वी आर अज्यूमिंग दैट आवर डिफरेंस इक्वेशन इज लीनियर.
difference equation is linear. So you can this way you can calculate the CF and PI of a differential equation. जरा अब हम बात करते हैं, let's take some example to demonstrate this two responses. Let's take one difference equation, example number 1. Let's calculate example number 1, and what it says that y of n equal to minus 0.5 y of n minus 1 plus x of n. This equation is given where x of n is equivalent to u of n. The x of n input to the system is unit step sequence. Input to the system is unit step sequence. So how to calculate this? So first calculate zero input response. So how we can calculate zero input response? By writing y of n equal to lambda to the power n and x of n equal to 0. What is the idea? कि x of n को input को आप 0 कर दे और yn को lambda to the power n लिख दे, तो you can get the zero state response. So I should say, or CF. So I should say this equation will be lambda to the power n equal to minus 0.5 lambda to the power n minus 1, because lambda yn equal to lambda n, so y of n minus 1 is lambda of n minus 1 plus this is input, and what is input? Input is 0. So I can say this is lambda to the power n plus 0.5 into lambda to the power n minus 1 equal to 0. If I take lambda to the power n common, then I can say 1 plus 0.5 divided by lambda equal to 0. This cannot be 0, so this will be 0. So I should say 1 equal to minus 0.5 divided by lambda. So lambda equal to minus 0.5. So what is solution? I can say y of zir can be written as C1 into minus 0.5 to the power n. This is the idea for zero input response. Now let's calculate the zero state response for this equation. So I should say zero state response, है ना? जैसा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को टाइम डोमेन में भी सॉल्व कर सकते हैं और लाप्लास से भी कर सकते हैं, वैसा ही डिफरेंशियल इक्वेशन को आप अभी हम Z ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं और टाइम डोमेन का भी मेथड है अपना. ओके, वी विल रिप्लेस y ऑफ n इक्वल टू k टाइम्स ऑफ xn, and we know that x of n is equivalent to u of n. So I can write the equation u of n minus, है ना, it's a k times of minus 0.5 into k into u of n minus 1 plus un. xn is equivalent to un. Now let's consider the case where n is greater than or equal to 1. So that you will not lose any of samples. So this is k plus this is 0.5 k, because when n is greater than 1, this is 1, this is 1 and this is 1 equal to 1. So I can say 1.5 is equivalent to 1. So I can say k equal to 2 by 3. Now what is solution of the equation? This is solution of the equation. I can say yn equal to 2 by 3 times of xn,
And what is xn? Xn is u of n. So this addition of this two equation is a solution. This is zero state response. This is zero state response. So I should say the solution of differential equation y of n is equivalent to c1 into e to the power minus 0.5 to the power n plus 2 by 3 times of u of n. And this is the solution for the equation. Solution कितना होगा? इन दोनों का sum will be the solution. So this is how we calculate the solution of difference equation. Let's take one more example on difference equation. In this difference equation, the output is given like this, and this is the x of n is input. And let's say let x of n is given as, let x of n is equivalent to 2 raised to the power n u of n. This is my x of n, and I am interested in the complete solution of this equation. So first we will consider the zero input response, ZIR. We are interested in zero input response. So how to calculate zero input response? So for zero input response, make x of n all inputs is equivalent to zero. सारे इनपुट को कितना बना दे? सारे इनपुट को हम जीरो बना दे एंड रिप्लेस y of n इक्वल टू लेमडा टू द पावर n. और इसके लिखने के रूल वैसे ही हैं जो रूल आपने कहां पढ़े थे, जो रूल आपने पढ़े थे डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर द CF कैलकुलेशन. So I can say this will be lambda to the power n minus 2 lambda to the power n minus 1. Then we are having minus 3 lambda to the power n minus 2. This is equivalent to 0 because input is 0, so all inputs are 0, I can say. Now I can take lambda to the power n common from here. If lambda to the power n common from here, it's a 1 minus 2 by lambda minus 3 by lambda square. This is equivalent to 0. What I can say that product of these two numbers is equivalent to 0. This cannot be 0. So then I should say this number is 0. So lambda square minus 2 lambda minus 3 equal to 0. So roots are minus lambda square minus 3 lambda plus lambda minus 3. So there are lambda common, it's a lambda minus 3 plus 1 common, it's a lambda minus 3. So answers are lambda minus 3 and lambda plus 1. ये दो आंसर हैं for the roots of this equation. So I should say lambda 1 is equivalent to 3 and lambda 2 equal to minus 1. So I should say the YH of n can be written as C1 into 3 to the power n plus C2 into minus 1 to the power n. And this solution of the equation is known as homogeneous initially relaxed system. When input is 0, this is the output. Now I can say that I can calculate the PI integral or zero state response also. So I can say to calculate zero state response, what we will do? We will replace, because we know that this is linear equation, so we will replace y of n is equivalent to k times of x of n, and this is the solution of the equation. So I can say y of n is equivalent to k times of 2 raised to the power n into u of n. Now what I can say, let's okay, this ZIR is fine. YH of n is C1 into 3 to the power n plus C2
into minus 1 to the power n. This is first equation. Now I can replace this. Now I can replace this by another equation, है ना. Let's calculate the zero state response. तो इसको clear कर देता हूं मैं. The next thing is zero state response. The next thing is zero state response. So how to get this? I should say I will replace y of n is equivalent to 2 raised to the power n u of n into k. So let's replace it. I can say y of n is equivalent to 2 raised to the power n into u of n minus 2 to the power n minus 1 into u to the power n minus 1 minus 3 to the power 3 into 2 to the power n minus 2 into u of n minus 2. This is equivalent to 2 to the power n u of n plus 4 into 2 to the power n u of n minus 1. So this is the whole idea for the circuit. Now I can say let's consider this for t greater than or equal to 2, so that you cannot vanish any term, and this is multiplied by k. So I should say this is k, this is multiplied by k, this is multiplied by k. Output is k times of this. Fine. If you put n equal to 2, this is 4k and u of 2 is fine. If you put n equal to 2, it's a 2 minus 1, it's a 2k. If you put n equal to 2, it's a minus of 3k is equivalent to 2 raised to the power 2 is 4. This is 4k, this is minus 2k minus, okay, this is 2, okay, 2k, fine. एक 2 और है इसमें, है ना, into 2, there is one more 2. So this will be minus of 4k. And here I am having 3, so it's a fine. 2 raised to the power 2 is 4 plus 2, 8. This is the story. I can say this is cancel. Okay, so I can say k equal to 12 divided by minus 3, and 12 divided by minus 3 is minus 4. So I can say the solution of this equation is y of n equal to 2 raised to the power n u of n into minus 4. So what is the complete solution of the equation? This is zero state response. So I can say the complete equation y of n is given by C1 into 3 to the power n, and C1 and C2 are initial conditions, minus 1 plus 2 to the power n u of n minus of 4. This is the complete solution of the equation. So you can approach the difference equation in the same manner you approach the differential equation. The idea is same for difference equation, और उससे ज़्यादा आसान calculation है difference equation का. So this is how we can solve the differential equation in discrete system.